बच्चों अब हम कर रहे हैं चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखो। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद आपके पास जो नॉलेज होने वाली है, पहली है डिफरेंशिएट बिटवीन asexual एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपको समझ में आएगा कि asexual और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या है, कैसे है। Describe the different ways in which plants reproduce sexually। ठीक है, कौन कौन से मोड्स होते हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद है डिस्क्राइब हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन प्लांट्स और एक्सप्लेन हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड एंड फाइनली describe the ways in which seeds are dispersed। ठीक है, ओके देखिए आगे। देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ, देखते हैं पढ़ के क्या है ये। Cut a 6-inch piece from a healthy branch of a bougainvillea or rose plant. Ensure that the cutting has nodes। ठीक है, नोड्स वो जहाँ पे ये लीव्स और ब्रांचेस ग्रो करते हैं ना वो। Fill a pot with soil and place the cutting in it with at least one node in the soil and one above। Place the pot in sunlight and water it regularly। In a few weeks, you will notice new leaves on the cutting. If you gently put it out of soil, you will see that roots have formed। ठीक है, तो एक तरीके का रिप्रोडक्शन हो गया, एक तरीके का नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके साथ नीचे एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फोटो। Pistil and stamens of a lily, यानी फोटो बाय थॉमस ब्रसेल। चलो ये फोटो दे रखा है, ये जो शेप दे रखी है ना यहाँ पे उसका बताया हुआ है, ये देखिए। ओके, तो ये जो फोटो है ये स्टेमन और पिस्टिल में है। ये फोटो किसने लिया है, वो है थॉमस ब्रसेल। ये तो काम की चीज नहीं थी, हमने अननेसेसरी पढ़ लिया। ओके, आगे देखते हैं। तो जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। रिप्रोडक्शन इन is the process by which organisms reproduce young ones of their own kinds। ठीक है, तो ये अपने आप में एक डेफिनेशन है, तो आपको ये याद कर लेनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो उसके आंसर में आप ये पूरी की पूरी लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, दिस फुल लाइन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन का जो आंसर है वो मैंने ऊपर मार्क किया, क्योंकि साइंस में इन टेक्स्ट के अंदर मतलब अंदर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए जहां जहां जो जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, दो रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, it is essential for the survival of the kind of organism। समझ आया? मतलब ये है कि एक इंसान
उसके सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन उस स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि एवरी लिविंग बीइंग लिव्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो जो स्पीशीज है, वो जो प्रजाति है, वो आगे आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, एग्जिस्ट करती रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है। प्लांट्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स दैट हेल्प देम टू रिप्रोड्यूस। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। देखो अगेन एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन होगा कि भाई which part of the plant is reproductive part? तो आंसर होगा the flower is the reproductive part of a plant। ठीक है, तो ये खुद ब खुद अपने आप में एक आंसर है, मार्क कर देते हैं इसे। The flower is the reproductive part of a plant। और इसका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि which part of the plant is reproductive part। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये है क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर आप ऊपर लिखी लाइन लिख के ऐसे, समझ आया? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप खुद ब खुद बना सकते हो, आपने बना लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है यू हैव लर्न दैट सम फ्लावर्स become fruits and fruits have seeds that help plants to reproduce. However, not all plants reproduce through seeds. Plants that do not have flowers have different modes of reproduction. तो ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते हैं, उनके लिए अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि वो स्पीशीज भी अगर कंटिन्यू करेगी तो रिप्रोडक्शन तो उनके लिए भी जरूरी है। अब अगर उनके पास फ्लावर नहीं है तो दे रिप्रोड्यूस डिफरेंट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ऑफ टू टाइप्स। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो ब्रॉडली में आप लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड में आप लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब आती है इनकी डेफिनेशन। तो इसमें जो सेक्सुअल है, इसमें लिखा है कि इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। The offspring are exact copies of the parent। समझ आए? तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। तो ये डेफिनेशन हो सकती है किसकी? कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप लिखेंगे कि इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। बस इतना ही। ठीक है, और व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो उसमें फिर आप आगे ये ऐड कर सकते कि द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। क्लियर? इसके बाद है सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट प्लांट, वन मेल एंड वन फीमेल आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, the offspring are not exact copies of the parent. Seeds are formed
in this type of reproduction. तो ये सेक्सुअल का हो गया। बहुत ध्यान से पढ़ना है बुक को आपको, और हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ काम की चीज मिलेगी और उसको आपने याद रखना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से टाइम देके पढ़ना है। आगे लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और सबसे पहले है एसेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, यानी स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन। तो सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक ferns, mosses, as well as fungi produce small round bodies called spores. तो देखो, एक तो क्वेश्चन यही है कि भाई व्हाट आर स्पोर्स। तो इसके एग्जांपल में इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन आप करेंगे कि सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक ferns and mosses as well as fungi produce small round bodies called spores. इसके आगे लिखा है each spore is covered by a hard and thick wall which protects it from harsh conditions like extreme temperatures and lack of water. So the spores होते हैं, they are covered by a thick wall for the protection. आगे है a spore becomes a new plant only when the temperature is correct and water is present. ठीक है, और spores are produced in structures called sporangia. सिंगुलर क्या है? स्पोरेंजियम। तो एक मतलब फर्स्ट मोड जो हो गया एसेक्सुअल वाला हो गया, वो है स्पोर फॉर्मेशन। और इसमें जो एग्जांपल्स याद करने हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, उसमें फर्न्स लिख सकते हैं, मॉस लिख सकते हैं, फंगी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पोर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको याद करना है, और जर्मिनेशन कैसे होता है ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जो फ्रेगमेंटेशन है, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फ्रेगमेंट्स की बात कर रहे होंगे। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या करना है? इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अवे टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, and this kind of reproduction occurs in a freshwater alga called spirogyra. स्पायरोगारा में जो रिप्रोडक्शन मोड है वो है फ्रेगमेंटेशन। एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अवे टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड ईच फ्रेगमेंट बिहेव्स as an individual organism, and this helps it to multiply very fast. ठीक है, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, यानी कि दूसरा मोड, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे दे रखा है बडिंग। तो व्हाट इज बडिंग? बडिंग होता है बच्चों, this kind of reproduction is seen in microorganisms such as bacteria and yeast. A small bud forms on the surface of the parent organism. Note that this kind of bud is different from a flower bud. जो फ्लावर बड है वो तो अलग है, क्योंकि जो अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावर है उसी को हम फ्लावर बड बोलते हैं, बट वो बड और ये बड बिल्कुल अलग है। ठीक है, द बड becomes larger and breaks off
from the parent to form a new organism. ठीक है, तो this is called budding. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो छोटी छोटी बर्ड्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। ये देखो यहाँ नजर आ रही है ना आपको छोटी छोटी बर्ड। These are birds. और ये देखो ये सेपरेट हो गई यहाँ से, समझ आया? ओके, आगे देखिए। आगे दे रखा है टीचर डेमोन्स्ट्रेशन। एम है टू ऑब्जर्व बडिंग इन यीस्ट। मटेरियल नीडेड है बेकर्स यीस्ट, warm water, sugar, microscope. Method: look at some baker's yeast under a microscope. Take note of the size and shape of the yeast cells that you see. Add baker's yeast and a spoonful of sugar to a cup of warm water. After a day, take a drop of the solution and observe it under the microscope. You will see that little birds have formed. The sugar serves as food for the yeast cells to multiply. Okay? तो अगर आपके पास ये मटेरियल अवेलेबल है तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद एक निबलेट है और इसमें लिखा है कि it is not only microorganisms that reproduce by budding. The hydra is a small freshwater animal that reproduce by budding, है ना? And corals and sponges can also reproduce by budding. बडिंग के देखो 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये सारे याद रखने हैं। हाइड्रा हो गया और कोरल्स और स्पॉन्जेस, ये सारे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप दे रखा है और नेक्स्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? पहले तो आपको यही लर्न करना पड़ेगा कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसका आंसर होगा, यहाँ मार्क कर देते हैं, the parts of a plant that help it to live and grow, such as its roots, stem, and leaves, are called vegetative parts. ठीक है, are called vegetative parts. यहाँ तक हो गया। और इसके बाद in some cases new plants grow from the vegetative parts of a parent plant, and this is called vegetative propagation of propagation. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये आपके डेफिनेशन हो गई। एंड इट अकर्स नेचुरली इन सम प्लांट्स and it is also carried out artificially by humans in some cases. ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, आगे देखिए। आगे लिखा है प्रोपगेशन थ्रू रूट्स। तो रूट्स के थ्रू कैसे होगा प्रोपगेशन? अब हम बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग प्लांट्स हैं तो वो अपने अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसी में सबसे पहले हमने लिया है रूट्स को। तो देखिए, सम प्लांट्स लाइक द स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, कैरेट एंड बीटरूट reproduce through their roots. These plants store food in the roots. When these roots are planted, new plants grow from them. तो एक हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट रूट, यानी कि थ्रू रूट रिप्रोडक्शन। दूसरा है प्रोपगेशन थ्रू स्टेम्स। स्टेम्स के थ्रू कौन कौन से प्लांट हैं जो ग्रो कर सकते हैं? देखिए,
So some plants like the potato reproduce through stem tubers, and stem tubers are swollen parts of the stem that store food underground. A potato has small buds on its surface called eyes, and shoots grow from these eyes. ठीक है? इसके साथ साथ rhizomes are modified underground stems that give rise to roots and stems, ginger, turmeric, and water lily, spread by producing rhizomes. इसके आगे क्या देख सकते हैं? इसके आगे दे रखा है bulbs. Bulbs are modified stems surrounded by fleshy leaves that store food. When a bulb is planted, a new plant grows from it. Onion, garlic, lily plants reproduce through bulbs. Okay. आगे लिखा है plants like the taro यानी कि colocasia produce combs and they look like tubers but have scaly leaves. इसका होता है runners. The runners grow horizontally along the ground and give rise to roots and vertical shoots at specific points on the stem called nodes. Mint, strawberry, and some grasses reproduce through runs. तो ये बुक बहुत अच्छी है आपकी क्योंकि इसमें ऑलरेडी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको आपने लर्न करना है. ठीक है. इसके साथ साथ कुछ और लिखा है डू इट. तो डू इट में लिखा हुआ है कट अ फ्रेश पोटैटो in half, making sure that each half has some eyes. Bury the two pieces separately in soil and water them daily. After a week, remove them from the soil and examine them. You will notice new plants growing on the two halves of the potato. Try doing this with ginger and turmeric as well. ठीक है. आगे लिखा है cut an onion in half from top to bottom and observe the stem forming a thick white disc at the bottom. Roots grow from it. The fleshy leaves of the onion store food. इसके बाद बच्चों है propagation through leaves. तो लीव्स के थ्रू जो प्लांट्स हैं उसमें एक तो ब्रायोफिलम तो है ही जो लीव्स के थ्रू भी ग्रो कर सकता है. इसमें क्या है in the case of some plants like the bryophyllum, small plantlets grow along the edges of the leaves and these plantlets fall to the ground and give rise to new plants. Okay. Artificial methods of vegetative propagation. Plants can also be produced by artificial methods. ऐसा नहीं है कि भाई नेचुरली ही रिप्रोडक्शन है, आर्टिफिशियली भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखिए. आर्टिफिशियली में आप कर सकते हैं layering. In this method, a stem or a branch is bent to the ground. See figure 12.10. A small part of the stem is buried in soil so that roots develop there. Plants like grapes, climbing roses, and jasmine are propagated this way. And this method of propagation occurs naturally there.
इसके बाद है cutting. In this method, a small part of a stem, leaf, or root is cut and planted in soil. This is called cutting. See figure 12.11. It develops roots and forms a new plant. The rose, hibiscus, and bougainvillea are commonly grown through cuttings. ठीक है. इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या है? ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड है. इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, इसमें this method is commonly used to combine the desirable characteristics of two varieties of plant. The stem of a plant is cut off so that its roots are still in the soil, and this plant is called stock, and it is chosen for its hardy roots. A stem cutting from the another healthy plant named the sign is placed over the stalk. The sign is usually chosen for its flowers, fruits, and so on. The stalk and the sign are tied together in such a way that the tissues of the two parts unite. See figure 12.12. The stalk provides the sign with water and minerals that it absorbs from the soil. The resulting plant has the hardness of the stalk, but the desirable fruits or flowers of the sign. Okay? तो ये हो गया क्राफ्टिंग. क्राफ्टिंग कैसे करनी है वो इस फिगर में भी आपको दिखाया गया. समझ आया? ओके, आगे देखते हैं. आगे एक और निबलेट है और एक और क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर. क्वेश्चन होगा व्हाट इज टिश्यू कल्चर, और उसके आंसर में आप लिखेंगे कि टिश्यू कल्चर इज अनदर मेथड बाय व्हिच प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड आर्टिफिशियली. A cell or tissue of a plant is taken and placed in a solution that contains special nutrients. It is made to grow under control and hygienic conditions in a laboratory. The cells of the plant divide quickly, and many new plants can be produced from the parent plant. The new plants are disease-free. Okay? So this is also an artificial method of propagation. इसके बाद लिखा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो देखो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में या तो एडवांटेजेस पूछे जाने वाले हैं या डिसएडवांटेजेस पूछे जाने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में. तो आपको दोनों ही करने होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या पूछा जाने वाला है. तो इसमें आप लिखेंगे vegetative propagation has many advantages. Number one, plants that do not produce seeds can reproduce this way. Since only one plant is required, pollination is not needed. It is a fast method of reproduction. Plants with desirable characteristics can be propagated easily because of the offspring are exactly copies of their parents. ठीक है, और इसके आगे आप लिख सकते हैं. वैसे तो ये सारे पॉइंट्स यहीं खत्म हो जाते हैं. इसके आगे है डिसएडवांटेज. तो डिसएडवांटेज में आप लिखेंगे अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट सिंस द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट copies of the parent plant, they may also carry undesirable characteristics from the parent.
Since there is no variation between plants produced in this way, all of them may be vulnerable to the same disease. यानी अगर कोई एक प्लांट को कोई डिजीज हो जाती है तो सारे के सारे प्लांट्स को डिजीज हो सकती है क्योंकि वो सारे के सारे एक जैसी हैं. Germs may also transmitted from parents to offsprings, and this usually does not happen with seeds. और ये सब सीड्स के साथ जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये सब सारी चीजें सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती. ठीक है ना. आप देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने बोले थे वो यहाँ पे भी देखो दे रखे हैं. जैसे व्हाट आर स्पोर्स, व्हाट आर rhizomes. Give 2 examples of plants that reproduce through rhizomes. Say whether the following statements are true or false. Correct the false statements. New plants obtained by asexual reproduction are identical to the parent plant. ये तो true है. The sweet potato and potato both reproduce through the stem. नहीं. तो स्वीट पोटैटो वो तो रूट्स के थ्रू उगता है और जो पोटैटो है वो स्टेम के थ्रू वो स्टेम है वो भी बर्ड्स के थ्रू उगता है पोटैटो भी, है ना. ये तो ये सारे आंसर्स अभी हमने देखे थे. तो ये तो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस हैं, वो तो आपने तैयार करने ही करनी. अब इसके बाद मेन जो सेकंड पार्ट था इस सेक्सुअल, और उसके बाद जो सेक्सुअल पार्ट है वो अब यहाँ से शुरू होगा. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. So in most flowering plants, flowers are the main organs of reproduction, and you have learned about the parts of a flower. The stamen is the male part of the flower and the pistil is the female part of the flower. Flowers that contain both stamens and pistils are called complete or bisexual flowers. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. इसके आंसर में आपने लिखना पड़ेगा कि फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टल्स आर कॉल्ड कंप्लीट और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. स्टेमेंस यानी कि मेल पार्ट और पिस्टल यानी कि फीमेल पार्ट. और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अगर एग्जांपल्स आते हैं तो आप ले सकते हैं रोज, मैंगो एंड हिबिस्कस आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स दैट bear bisexual flowers. Flowers that contain either only stamens or only pistils are called incomplete or unisexual flowers. ठीक है. तो जिनके पास या तो स्टेमन या पिस्टिल है वो यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं. और उसके एग्जांपल में आप लिखेंगे पपाया, वाटरमेलन एंड मेज आर एग्जांपल ऑफ प्लांट्स that bear unisexual flowers. And both types of flowers may be found either on the same plant, for example in the oak, or on different plants, for example in papaya. ठीक है. और इसके आगे की इंफॉर्मेशन है, देखिए इसके आगे की इंफॉर्मेशन है स्टेमन यानी कि मेल पार्ट. द स्टेमन इज मेड अप ऑफ एन एंथर एंड अ सपोर्टिंग फिलामेंट. तो दो मेन चीजें मेल पार्ट में, एंथर और फिलामेंट. द एंथर कंटेन्स pollen sacs that contain a fine powdery substance called pollen, and these pollen grains produce the male gametes or male sex cells. ठीक है. The pistil consists of an ovary, a sticky stigma, and a tube-like style. The ovary contains one
or more ovules. The ovule contains the egg cell or the female gamete. आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है examine a hibiscus flower and note the arrangement of the sepals, petals, stamens, and pistils. Carefully remove the pistil from the flower. Use a blade to make transverse and longitudinal section of the ovule. Use a magnifying glass to see how the ovules are arranged inside it. यानी कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं and observe a hibiscus flower on the plant over 10 days to see how the seeds develop. अब आती है एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन. देखो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत कुछ है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, तो इसलिए बड़ा भी है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है. तो अब देखो एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अभी पॉलिनेशन. तो व्हेन द एंथर matures, pollen grains are released. They are then transferred from the anther to the stigma. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. तो pollination की definition में आप लिखेंगे सिर्फ इतना कि the transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है it is an essential step needed for the male and female gametes to come together. And there are two kinds of pollination, self-pollination and cross-pollination. तो देखिए दो डेफिनेशन और आ गई कि what are self-pollination and what are cross-pollination. तो जब सेल्फ की बारी आएगी तो आप लिखेंगे self-pollination is the transfer of pollen from the anther of a flower to the stigma of the same flower or another flower on the same plant. The cross-pollination is the transfer of pollen from the anther of a flower to the stigma of a flower on another plant. ठीक है, तो सेल्फ में क्या हो रहा है? Self pollination is the transfer of pollen from the anther of a flower to the stigma of the same flower or another flower on the same plant. जबकि क्रॉस में क्या हो रहा है? Cross pollination is the transfer of pollen from the anther of a flower to the stigma of a flower on another plant. इसके बाद है pollen. Pollen grains are light and are carried by insects, wind and water. ठीक है, ओके. इसके बाद देखो कैसे कैसे pollination पॉसिबल है. तो इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है. इंसेक्ट pollination कैसे होता है? Insects such as bees, wasps and butterflies fly from flower to flower to drink nectar. When an insect visits a flower to drink its nectar, some pollen grains stick to its body. When the same insect visits another flower, the pollen is transferred to the stigma of that flower. Insect-pollinated flowers usually have colorful petals and a strong scent to attract
insects. और इस तरीके से विंड पॉलिनेशन भी होता है। विंड पॉलिनेशन में क्या होता है, देखो विंड पॉलिनेशन में होता है बच्चों कि plants that are pollinated by the wind produce large amount of pollen grains. Pollen is light and can easily be carried by the wind. Flowers that are pollinated by the wind are usually small, not colorful, and do not have a strong scent. Their petals are small so that they do not obstruct the wind. Maple, oak, and pine trees and the grasses are wind pollinated. Note, pine trees have cones and not flowers. Okay, आगे बढ़ते हैं। आगे है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, वाटर पॉलिनेशन में है कि plants that are pollinated by water also produce large amount of pollen. The pollen is released into the water and is carried to other flowers by the water. And this type of pollination is very rare, as most aquatic plants are pollinated by insects. It is seen in pondweed and sea grasses. Yeah. इसके बाद लिखा है निबलेट, यानी कि the giant Amazon water lily is a fragrant white flower that blooms only at night. It turns purple after it is pollinated. ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। इसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये भी देखो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद करनी चाहिए। When a pollen grain reaches the stigma, a small tube grows out of it. The tube, called the pollen tube, carries two male gametes and enters the ovule. One of the male gametes and the female gametes, the egg cell, join to form a single cell called a zygote, and this process is called fertilization. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन ये भी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। जो फ्रूट्स और सीड्स हमें नजर आते हैं वो कैसे बनते हैं, देखिए। इन मैनी फ्लावर्स द ओवरी swells after fertilization to become the fruit. In some plants like the pea, the ovary hardens to form the pod. The walls of the ovules become hard and the ovules become seeds. The zygote divides repeatedly and forms the embryo inside the seed. The petals, sepals, and other parts of the flower usually dry up and fall off. Okay. Okay. आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल यानी कि जो सीड है वो अपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। You have learned in earlier classes that the dispersal of seeds is important, and what will happen if all seeds of a plant fall in the same place. Proper dispersal of seeds prevents overcrowding and ensures that the seeds get enough nutrients and sunlight to grow into healthy plants. Seeds are dispersed in many ways. जैसे wind dispersal,
So seeds that dispersed by the wind are small and light, and some seeds also have wing-like structure that help the wind to carry them. To faraway places, and some other seeds have fine here. The seeds of the dandelion, domestic, and maple are dispersed by wind. Okay. इसके बाद नेक्स्ट है वाटर डिस्पर्सल. वाटर डिस्पर्सल में क्या है देखिए, वाटर डिस्पर्सल में है the seeds of some aquatic plants and some terrestrial plants that grow near water have waterproof outer covering or special features that help them to float on water. The coconut's husk is light and help the coconut to float. The seeds of the lotus are carried in a seed pod that has trapped air. आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एनिमल डिस्पोजल. एनिमल डिस्पोजल में क्या है देखो, एनिमल कैन डिस्पोज seeds in a variety of ways. They eat fleshy fruits such as mangoes and throw away seeds, which later germinate. Animals sometimes swallow the seeds of the fruits they eat, and these seeds have a hard covering and cannot be digested. They come out of the animal along the feces and can germinate into plants. Ants and rodents hoard seeds in hiding places. Such seeds can later germinate into new plants, and some seeds have hooks and spines on their surfaces. And these seeds stick to the fur of animals and can be carried away from the parent plant. Okay, इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव डिस्पर्जल. तो इसमें क्या होता है, some plants have pods that break open with force when they mature, and this throw the seeds some distance away from the parent plant. Seeds of the balsam and pea are dispersed this way. इसके बाद आता है जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन देखो दोबारा से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या है जर्मिनेशन? A seed germinates into a seedling in the presence of water, air, sunlight, and nutrients. When a seed germinates, a structure called the radicle develops first. It grows into the ground and becomes the root. The plumule develops next. It goes away from the ground and forms the shoot. Once the leaves appear, they start to make food. Okay, तो ये है germination. और इसके बाद लिखा है do it, design an experiment to show that seeds need water, air, warmth to germinate. बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर खत्म. इसके बाद क्विक चेक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके बाद ये सम अप दे रखा है. सम अप मतलब वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और फिर वापस से आपकी बैक एक्सरसाइज. ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे क्योंकि ये वीडियो पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर सकते हम. तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बैक एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कुछ भी पीछे दे रखा है इन टेक्स्ट क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. ओके, तो तब तक इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा भी है, बहुत सारी नई चीजें. तो ये बात सही है कि एक बार में तो नहीं समझ में आता, कम से कम 2-4 बार 5 बार
आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो या तो वीडियो को बार बार देखो या फिर अपनी बुक से बार बार चैप्टर को पढ़ो। जितनी ज्यादा बार देखोगे या पढ़ोगे उतना ही चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, याद भी रहेंगी। ठीक है, और आपका याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें याद रहेंगी तभी एग्जाम में कुछ कर पाएंगे, और अगर याद नहीं रहेंगी तो सब बेकार है, मेरी मेहनत भी और आपकी भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।